Please write isomerism. Simple definition. You must be aware of the basic definition of isomerism. Two or more compounds having same molecular composition. Same molecular composition. When I say composition, I say it is molecular formula. Two or more compounds having same molecular composition but different properties. Same molecular composition but different properties are called isomers, and the phenomenon of existence of these isomers is called isomerism. देखिए बड़ा बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको. इफ यू सी नॉमेनक्लेचर तो आपको आते ही है. दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज ईथर. इथाइल अल्कोहल और ये आपका डाइमिथाइल ईथर. बोथ हैव गॉट द सेम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, दैट इज C2H6O. दोनों का मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन सेम है बट प्रॉपर्टीज अलग है. एक प्रॉपर्टी तो आप अच्छे से जानते हो, C2H5OH, taste. Right, so this is one of the examples. Now the classification. Classification में क्विक मैनर में क्लासिफिकेशन करते हैं so that we can cover all isomers. One, you must be aware functional. कई लोगों ने 9-10 में पढ़ रखा होगा functional, or we call this as constitutional isomerism. And another is space or stereoisomerism. So we classify isomerism into two categories. One is functional and second is space. तो छोटा छोटा नोट लिख लीजिए दोनों में. Functional isomerism you write. देखिए आइसोमेरिज्म ये उसी का पार्ट है, तो इधर भी कॉम्पोजिशन विल बी सेम. तो फाइनल यहाँ पर लिखेगा प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट. सॉरी, ये फंक्शनल के बदले ये गलती से इसको स्ट्रक्चरल लिखना है. फंक्शनल इज द पार्ट, स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल. Properties are different because of the difference in the structures, as the name suggests. Structural isomerism. Properties are different because of the difference in the structures. इधर भी लिख लीजिए, फिर इसको डिटेल डिस्कशन करते हैं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यहाँ पर composition is same, structure is same, the difference is of the अरेंजमेंट. स्पेस नाम से ही पता चल रहा है उसको. कॉम्पोजिशन इज सेम, स्ट्रक्चर इज सेम, द डिफरेंस इज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन द स्पेस. दीज आर द बेसिक डेफिनेशन. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट इन द स्पेस. इसको भी डिवाइड कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं एग्जांपल्स के साथ. वन ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स इज चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म. फिर आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म. देन वी हैव हियर
functional isomerism. Functional isomerism. Then we have here metamerism, and another one is tautomerism. सर वो नीचे का दिख रहा नहीं है तो आप प्लीज से And if we classify space isomerism, here it is configurational isomerism, or better I say configurational stereoisomerism, and one is conformational. Conformational stereoisomerism. This configurational stereoisomerism is further divided into two. One we call as geometrical isomerism and another one is optical isomerism. Copied. Should I start the discussion? डन सर कंफर्मेशनल में कोई कैटेगरीज नहीं है क्या? नहीं, कंफर्मेशनल अभी उसका डिस्कशन करेंगे तो ज्यादा आइडिया आएगा आपको क्यों नहीं है कैटेगरी. अच्छा ओके ओके थैंक यू सर. चलिए, नाउ आई स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. देखिए बहुत इजी है. चेन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चलता है. पहली चीज तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब डिफरेंस विल बी ऑफ द स्ट्रक्चर्स. और फिर लिखा हुआ है चेन, मतलब स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस किसकी वजह से आया? चेन. फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, 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 CH3. फिर आप चेन अलग कर दो. So the two will be considered as chain isomers. You can see same number of carbon atoms, same number of hydrogen atoms, but the parent chain is different. So these are the chain isomers. Similarly, I can write another example. This one and this one. These two again you can see same number of carbon atoms, same number of oxygen atoms, same number of hydrogen atoms, but chain is different. That is why chain isomerism. Should I erase this? क्या? दोनों ये अभी चेन का ही एग्जाम्पल चल रहा है. यू कैन क्लियरली सी दोनों में जो चेन है वो ही डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है, इक्वल है. स्ट्रक्चर्स में केवल डिफरेंस आया. अच्छा, in these two examples we have selected the open chain. अभी एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं. Can you tell me how many carbon atoms are there in this compound? 3. अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर लिखना होगा
So everywhere you have carbon, 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 and tetravalency. So two hydrogen atoms will be attached. So you can easily say the molecular formula as C2H6. Now, sorry, C3H6. Now think about open chain compound having 3 carbon and 6 hydrogen atoms. So easily that can be predicted. This is so अभी आते हैं प्रोपीन और ये है साइक्लोप्रोपेन. किस चीज का डिफरेंस आया? चेन का. ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस करके लिखते हैं और इसको लिखते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म. रिंग चेन आइसोमेरिज्म. Although it is within the chain isomerism, but it can be said as ring chain isomerism. One isomer is in ring form and another one is open chain. Now if you compare these two isomers, molecular formula is same, C3H6. Now if I ask you, you tell me the alkane of 3 carbon atoms, तो क्या होगा? C3H8, CnH2n plus 2, C3H8. अच्छा, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है यहाँ पर? दो हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस आया. अच्छा, बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन, ये जो यहां दिख रहा है, डबल बॉन्ड कितना आ गया? 1. इसको, और बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड वी कॉल दिस कंपाउंड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हाइड्रोजन एटम्स की वजह से एक अनसैचुरेशन आया, तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2. और ये कौन से हाइड्रोजन एटम्स हैं? जो एल्केन के रिस्पेक्ट में कम पड़ रहे हैं. तो गिवन फॉर्मूला था C3H6 corresponding to 3 carbon we have written the alkane formula. तो number of hydrogen atoms you can see 2. If you divide with this 2, you get 1 degree of unsaturation. Now similar manner, if I ask you how many degree of unsaturations will be there if the compound has triple bond? 2 degree of unsaturation. अच्छा, रिंग में भी ध्यान से देखो कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नजर आ रहे हैं. Although no double or triple bond, but use this formula you will get to know degree of unsaturation. C3H6 था, C3H8 एल्केन होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स कम पड़ रहे हैं, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फिर से कितना आया? 1. कंक्लूजन पार्ट इज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइसोमर्स लिखने में बहुत हेल्प करता है. सर ये हमेशा एल्केन के ही कंपैरिजन में. हाँ, तभी तो एल्केन इज कंसीडर्ड टू बी अ सैचुरेटेड वन. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, if it is double bond 1 degree of unsaturation, if it is triple bond 2 degree of unsaturation, if it is a ring then again you will be having 1 degree of unsaturation. क्लियर है? इसका फायदा देखिए कि अगर बाय चांस कभी किसी कंपाउंड में आपको ये पता चल गया कि कंपाउंड में वी हैव 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो आप कितने आइसोमर्स बना सकते हो? तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या क्या हो सकता है? कंपाउंड में है 1 ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड में है 2 डबल बॉन्ड्स, कंपाउंड में है 2 रिंग्स, कंपाउंड में है 1 double and 1 ring. Getting my point? So these are the different possibilities to write the structures, and this way we get to know different isomers. What will the answer to that? 2 degree of number of isomers. Excuse me, sir. Yes. Will you repeat this? We were disconnected. Should I erase this part?
Oh, no, no. Please copy, huh? What will be the answer to that then? 2 degree of how many isomers will be there? Abhi, I'll take an example, don't worry. It also depends on the number of carbon atoms. So you have to compare with the alkane, corresponding alkane. Yes, corresponding alkane. For those number of carbon atoms. Yes. Sir, in that 2 DOU example, sir, Yes, what happened? sir, in that 2 DOU example, can we have one double bond and one ring also, or it needs to be identical? I said not. No, not necessarily. 2 degree of unsaturation means it can have one double bond and one ring. ठीक है? Example दिखाता हूँ मैं आपको. सर तो फिर टोटल कितने कंपाउंड्स पॉसिबल है? वो आप डिसाइड करिएगा ड्रॉ करने के बाद. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू C4H6 दिस इज अ कंपाउंड गिवन. ठीक है, अभी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए क्या फाइंड आउट करोगे? कोरस्पॉन्डिंग एल्केन. तो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन क्या होगा? C4H10. अभी सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. कितना आया? 4 and divided by 2. How many degree of unsaturation? 2. तो 2 degree of unsaturation means it can have a triple bond. तो triple bond का अगर आप लिखेंगे तो ये जाएगा structure like this. तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं का. हाँ बिल्कुल, पोजीशन की वजह से भी चेंज होगा. तो इसीलिए आप देखोगे तो one of the isomerism is position isomerism. तो उस पर अभी नहीं जाते हैं, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कितने डिफरेंट टाइप्स के पॉसिबल कंपाउंड्स हैं. तो ट्रिपल बॉन्ड कवर हो गया. अभी क्या हो सकता है 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में? 2 डबल बॉन्ड. 2 डबल बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे आप? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2. ये डबल बॉन्ड का केस हो गया. अनदर आइसोमर. ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में इजी सा क्वेश्चन हो और पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल. तो आप जितनी पॉसिबिलिटीज है वो ड्रॉ कर रहे हैं और उसको रिजेक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली उसने बोला है कि आपको यहाँ पर 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड. तो आप बताइए 4 कार्बन एटम का रिंग क्या होगा? सिंपल. ठीक है, और साथ में क्या लगा दोगे? 1 डबल बॉन्ड. क्लियर है? लेकिन इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती कि भाई अगर मैंने रिंग जो है 3 कार्बन का दिया होता तो मैं साथ में इसमें क्या अटैच कर देता? मिथाइल. और डबल बॉन्ड लगा दूंगा. सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. तो ये कैसे लिख पा रहे हो? आफ्टर फाइंडिंग द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अदरवाइज इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बाद में जब भी जीओसी हम लोग करेंगे तब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी के लिए थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया कि क्या पॉसिबिलिटीज है. अभी सोचिए 2 रिंग्स. सर पर टोटल अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते. कर सकते हैं, उसके लिए और थोड़ी सी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है. 2 रिंग्स. अभी हाउ विल यू ड्रॉ 2 रिंग्स यूजिंग 4 कार्बन एटम्स? हाउ इज दिस पॉसिबल? लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल. अगर आप चाहोगे तो पॉसिबल हो जाएगा. दिख रहा है? So ये चीटिंग है. दिख रहा है 2 रिंग्स. कुछ भी है. अगर आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है. तो दिस वे वी कैन राइट डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स. ये मैं एरो दिखाया है कि आपका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन वो कुछ नहीं. सर एक और काट दो ना दूसरी तरफ से 4 रिंग हो जाएगी. नहीं, इतना पॉसिबिलिटीज अभी स्ट्रेन डेवलप होता है, वो सब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. Should I erase this? मैंने
मैंने केवल आपको दिखाया कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू राइट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स। ठीक है, अभी तो शुरुआत है। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल बनता है सर। बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं पढ़े आप? बड़े हैं। बाइसाइक्लिक का यूपीएससी नेमिंग नहीं किया तुमने? स्पाइरो, बाइसाइक्लो, अच्छा ही वाज क्या है नहीं किया। चलिए, आर मी रेजिंग दिस? सर एक सेकंड प्लीज। अरे यार, बाइसाइक्लो देखो ना, केवल 3 डायमेंशनली उठा दिया है उसने। Should I raise this now? Because we will. यस सर हो गया। We have to complete. मारवाड़ी बांधो। मारवाड़ी है ना। Now position isomerism. Position isomerism. नाम से ही पता चलता है composition is same but the structure will be different because of difference in the position of functional group. Clearly लिखिएगा, the structures are different because of difference in the position of functional group. Difference in the position of functional group. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH2OH और CH3, CH2, CHOH, CH3. Sir, can you repeat the statement? It's a part of structural isomerism. So here the two isomers will have same composition, but the structures will be different because of the difference in the position of functional group. Here OH is attached at first position. Here OH is attached at second position. Now you check number of carbon atoms in the main chain. तो इसको chain isomerism में place नहीं करेंगे, उसके बदले क्या बोलेंगे? Positional isomerism. Position of OH group different. सर ये N आइसो नियोपेंटेन वो चेन में क्या है? Sir, please repeat the नहीं statement. ना, चेन पोजीशन ऑफ OH जो है अगर एंड में है, बिकॉज इट इज एंड टू एंड, नंबरिंग इज डन फ्रॉम एंड टू एंड। हाँ नहीं मैं सर बोल रहा हूँ कि सपोज N पेंटेन या फिर आइसोपेंटेन या फिर नियोपेंटेन, उस पे फंक्शनल ग्रुप किधर है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि वो चेन आइसोमेरिज्म है कि वो चेन में है ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। यस, नाउ थर्ड में लिखिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चांसेस है कि आपको KVPY में फंक्शनल आइसोमर्स पे कोई क्वेश्चन मिल जाए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, as the name suggests, easily you can define two or more compounds having same molecular composition but different properties due to difference in the structures, and structures are different because of the difference in the functional groups. Conclusion is, सर रिपीट। the conclusion part is the compounds will be having different functional groups. तो आप केवल इतना लिख लीजिएगा, different functional groups. Different functional groups. और मैं रिपीट कर देता हूं जो मैंने पहले बोला था कि two or more compounds having same molecular composition but properties are different because of the difference in the structures. ये है structural isomerism तक। फिर structures are different because of difference in the functional groups. For example, अच्छा याद रखने का वो एक तरीका होना चाहिए इसमें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड 2 डबल बॉन्ड। तो
तो फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड और डबल आ गया। तो इसका एग्जांपल मैंने लिखा था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। So these two we can place in this category। इसको नाम दिया एल्काइन और इसको नाम दिया है एल्काडाइन। Recall the IUPAC nomenclature। Clear है? Same molecular composition, but here we have triple bond and here we have double bond। One belongs to the category of alkynes and another one alkenes। ठीक है, अच्छा, now if you recall the listen, in this case we do not have any other functional group like alcohol or carboxylic acid। For example, if I take this CH3 CH2 CH2OH, इसको अगर देखेंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन पिक्चर में आ गया। तो इसका अगर आपको फंक्शनल आइसोमर लिखना है, ऐसा दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक ऑक्सीजन हो बट नो अनसैचुरेशन। यू कैन नॉट थिंक अबाउट कीटोन और एल्डिहाइड, बिकॉज कीटोन और एल्डिहाइड अगर आप रिकॉल करते हैं तो कीटोन और एल्डिहाइड्स में आता है C डबल बॉन्ड O। यू कैन सी double bond, so this cannot be taken because here we do not have any unsaturation। ठीक है, तो दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर याद करो आप, CH3 CH2 O CH3। अभी आप देखोगे कोई अनसैचुरेशन नहीं आया, फुल्ली सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। एक एल्कोहल की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है और दूसरा ईथर। तो इसको हम बोल रहे हैं So you're not allowed to increase the degree of unsaturation, how can you, the composition will change, but you can decrease it. how Triple bond. Why can't you change the composition? What if the you degree of unsaturation overall Okay, overall it remains has- same, Yeah, I mean overall it has to remain. overall it should be same। Since it was fully saturated, here also it should be fully saturated। So these are the examples of functional isomers। और लेने हैं, आप कॉपी कर लीजिएगा। सर उसका नाम क्या होगा? ये फर्स्ट कैटेगरी आपने लिखा एल्काइन एल्काडाइन, दूसरा कैटेगरी होगा एल्कोहल्स ईथर। तो कभी भी आपको एक ऑक्सीजन पूरे कंपाउंड में नजर आए और फुल्ली सैचुरेटेड हो तो आप एल्कोहल्स ड्रॉ कर सकते हैं ईथर्स। क्लियर है? अच्छा, विद इन दैट देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज, लाइक एल्कोहल्स में ही आप लिख सकते हैं चेन आइसोमेरिज्म या पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बोलेगा तो आपको एट द सेम टाइम यू हैव टू राइट पोजिशनल आइसोमेरिज्म एंड Okay. चेन आइसोमेरिज्म। सर उसका नाम क्या होगा? किसका? सेकंड वाले का जो ईथर है। देखिए, इसको अगर IUPAC नेम्स के बेसिस पे लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा एल्केनॉल्स, एल्केनॉल्स, और इसको IUPAC नेम्स के बेसिस पे लिखते हैं एल्कॉक्सी एल्केन्स, तो इसमें कौन सा? एल्कॉक्सी एल्केन्स। तो IUPAC नेम्स के बेसिस पे the two isomers will be alkanols and alkoxy alkanes। Alkoxy part comes from the smaller alkyl part। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। क्विकली वी हैव टू फिनिश अदर। Ethoxy.
consider the case of this. Now you can see one oxygen atom and 1 degree of unsaturation. Obviously, the compound has one double bond means how many degree of unsaturation? 1. तो सर आपने इधर वो ऐसे करके क्यों फुल को बोलते हैं ना smaller part को alkoxy. Back to this. 1 oxygen 1 degree of unsaturation. तो ऐसा दूसरा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऐसी क्राइटेरिया फॉलो? तो कीटोन. तो आप इजीली दूसरा लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड और CH3. तो एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया. इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है क्या? डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं मिलेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक डबल बॉन्ड रख सकते हैं और एक OH ग्रुप रख सकते हैं. 1 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ओवरऑल कंपाउंड में. तो कैसा लिखा जा सकता है यहाँ पर? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH. इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा ये हो सकता है एक डबल बॉन्ड वाला पार्ट हो और एक ईथर का पार्ट हो. डबल बॉन्ड एंड ईथर. तो दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3. ये तरीके हैं आइसोमर्स लिखने के. अब देखिए इसमें एल्कोहल के बदले अभी ईथर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है. ये एल्कोहल है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑलरेडी दिख रही है यहाँ पर, और ये तो नॉर्मल कंपाउंड. तो लास्ट में का नाम क्या है? आप सोचिए. इन जनरल इसको आप बोल सकते हैं एल्कोक्सी एल्कीन्स. जैसे यहाँ क्या था? एल्कोक्सी एल्केन्स. आप इसका नेम क्या होगा वो आप सोच लीजिए. चलिए, कैन आई इरेज दिस? सर मिथॉक्सी और सोचिए. Should I erase this? Now I'll take another example of functional isomerism. CH3, CH2, C double bond, OH. या फिर एक और कार्बन ले लेते हैं. Now you can see how many oxygen atoms. Overall you just check how many oxygen atoms? 2. 2 oxygen atoms and 1 double bond means how many degree of unsaturation? 1 degree of unsaturation. इसका मतलब इस कैटेगरी को फॉल नहीं करता. अभी 2 ऑक्सीजन वाले ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं रिकॉल करिए. तो वन इज दिस कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है. दूसरा इसी का डेरिवेटिव है एस्टर ग्रुप. तो उसके लिए क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O और इधर आपको R ग्रुप लगाना है. सो इफ आई पुट CH3 here, then the remaining part, that is CH3 CH2, we have to write this side. So this is another isomer of this. ठीक है? 2 oxygen atoms, 1 degree of unsaturation. इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? डायोल हो सकता है कुछ. 2 alcohol groups, yes, we can place. At the same time, you need to write 1 double bond. ठीक है? तो you can think about those possibilities कि 2 OH group है, 1 double bond है. सर हाँ. तो इसमें अपने को मतलब ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ता है क्या? वी नीड टू चेक ईच एंड एवरी कंपाउंड एंड अरेंज इट as per the question given. Yes. Because many possibilities Thank will you, be sir. there. Second, we have two. Because if they ask total number of isomers in that situation, you have to write the other possibilities like chain isomerism and positional isomerism. ये तो मैंने केवल functional लिखकर दिखाया.
यहाँ पर क्या कोई चेन पॉसिबल है क्या दूसरी? Accordingly your isomer will change keeping the same functional group. Sir, can we have two aldehyde groups also? And one double bond? Yes, we can. But at the same time, but if you put two CO groups, then your degree of unsaturation will increase. So what you can do here, you can write one aldehyde with one OH group. You can write one ketone with one OH group. So these are different possibilities. आप परेशान मत हो, KVPY पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा. You can easily predict based upon the options given. Level तो तो मैं केवीपी में सब्जेक्टिव भी है ना? You need to have the idea of these केवीपी में सब्जेक्टिव भी है ना? 2010 तक था. objectives. क्योंकि मैंने एक पेपर किया. ऑब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स भी है. क्या? Should I erase this? 2010 का पेपर 2015 सर इस एग्जांपल में से दो ऑक्सीजन हम साथ में कनेक्ट कर सकते हैं. क्या सर बोले कि सर हम दो ऑक्सीजन साथ में कनेक्ट करते हैं और एक डबल बॉन्ड लगा रहे हैं. दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कर सकते हैं एनहाइड. यू हैव टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड. एनहाइड्रेट अगर बनता है तो आप लिख सकते हैं, बट यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इन दैट केस यू नीड टू राइट C double bond or 2C double bond, so your degree of unsaturation will increase. Now you write next metamerism. We have limited time. मेटामेरिज्म लिखिएगा. ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में. मेटामेरिज्म, और इसमें आई विल राइट द एग्जांपल. So what is the definition? I'll give you the definition. लिखिएगा two or more compounds having same composition but different structures due to difference in the alkyl groups attached with polyvalent atoms or groups. Polyvalent atoms or groups. देखिए polyvalent atom हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना है वो यूजुअली डाईवैलेंट होगा, लाइक ऑक्सीजन हो गया, NH हो गया, C double bond O. This whole part, this will be considered as divalent. For example, if I take the case of ether, you can see total carbon atoms here 4, 3 means propyl, methyl. Now we have ethyl and ethyl. So the two will be considered as metamers. Metamers. Done? Should I erase this? No. Have you copied these groups? Yes. No. अभी लिखा.
सर मेटामर्स के और थोड़े एक या दो एग्जांपल्स दो ना प्लीज. Sir, we were disconnected for 10 minutes. आप वीडियो लेक्चर देख लेना. So test पेपर सर से मेटाबॉलिज्म मिस हुआ सर, वो तो समझा दो. हाँ, मेटाबॉलिज्म का दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना. ये देखिए, this as a whole can be considered as divalent group. Now if I keep 3 carbon atoms one side, this is another isomer. The two will be considered as metamers. Difference in the alkyl groups attached with the divalent group or atom. ठीक है? Should I erase this? तो ऑटोमेरिज्म में लिखिएगा, it is a special kind of functional isomerism. It is a special kind of functional isomerism in which the two isomers exist together and remain in dynamic equilibrium with each other. In dynamic equilibrium with each other. This isomerism arises Sir, can you repeat? This is a special kind of functional isomerism in which the two isomers exist together and remain in dynamic equilibrium with each other. Dynamic equilibrium with each other. This isomerism arises due to migration. This isomerism arises due to migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to another polyvalent atom. From one polyvalent atom to another polyvalent atom. Just read this once. एक बार पढ़ लीजिए. So what do you mean by dynamic equilibrium? I will explain everything, don't worry. Consider the example of this CH3 C double bond O CH3. This is acetone. Here what happens, this one और एक इसी का दूसरा आइसोमर जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3. इसको कहते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एल्कोहल ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज ऑल, एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, दैट इज पार्ट ऑफ एल्कीन. सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज इनॉल फॉर्म. और ये कीटोन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म. नाउ कैसे कन्वर्जन होता है वो देखते हैं. Sir, number of hydrogens are more, right? In enol form.
carbon is tetravalent. Now if you see what is happening here, take this hydrogen atom. Since this is the functional group, this carbon is directly attached with this functional group. This carbon we call as alpha carbon, and the hydrogen which is attached with this carbon is called as alpha carbon. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो हुआ क्या है, ये जो हाइड्रोजन एटम है जिसको मैंने अल्फा हाइड्रोजन बोला है, ये माइग्रेट होकर किधर गया है, ऑक्सीजन के पास, और ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो रीलोकेट हुई है. तो व्हाट इज हैपनिंग, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम, दिस कार्बन इज पॉलीवैलेंट एटम, migration of hydrogen from this polyvalent atom to another polyvalent atom, that is oxygen, and this way we get this form which is known as enol form. So we get this if we write this as functional isomerism or tautomerism. This you have to write as tautomerism. But it is also functional, right? But this is, I said that this is a special kind, so you have to mention this as tautomerism. तो अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म के टाइम पर हमने कोई ऐसा ग्रुप लिख दिया हो तो उसको आप किस कैटेगरी में वापस रख देंगे, टॉटोमेरिज्म. क्योंकि ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि जो बाकी आइसोमर्स हैं दोज आर डिफरेंट कंपाउंड. डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इनको आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रख सकते. अगर ये है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा. While in other cases the two compounds were entirely different compounds. ठीक है. अच्छा, since this tautomerism is happening in keto and enol, इसलिए इसको स्पेशल नाम देते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लिख लीजिएगा, because there are other compounds also where you can find this kind of tautomerism. Should I erase this? Yes, sir. Now check this one, CH3 CH3C C double bond O CH3. Now look at this couple. What is happening here? This C double bond O attached with these two carbon atoms, both will be considered as alpha carbon. But the problem is this carbon does not have hydrogen atom. This carbon does not have hydrogen. So migration of hydrogen is from where? This one. From this side there will be migration of hydrogen atom. That is why your tautomer of this compound will be written like this. Sir, could you explain that alpha carbon? उसको alpha क्यों बोला है? Alpha means the carbon which is directly attached with functional group. Unfortunately, this carbon does not have hydrogen atom. So migration is possible only from this side. So you have to write enol from this side only. ठीक है? तो conclusion part. Let me complete this. What is the conclusion part for keto enol tautomerism? The basic condition is the keto form must have alpha hydrogen. ठीक है? तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, which of the following does not show keto enol tautomerism? तो अल्फा हाइड्रोजन is one of the conditions. लिख लीजिएगा यहाँ पर. Should I erase this? No. Can you just define the alpha carbon and alpha hydrogen? Yes. You said alpha carbon is what is attached to functional group in the end. Alpha carbon is the carbon which is directly attached with functional group. CO. Sir, इसका नाम क्या है? इस
इसको भी इनॉल ही बोलेंगे। और ये हमारे लिए कीटो फॉर्म है। इन अ जनरल मैनर वी से कीटो एंड इनॉल। So this is enol form, this is keto form. ठीक है? Should I erase this? Yeah. Now, if I give you this compound, will this compound exhibit keto-enol tautomerism? No. No. Symmetrical हो जाएगा. So even though this is keto form, enol form not possible because it does not have alpha hydrogen. ठीक है? अच्छा, इस कंपाउंड में होगा क्या? नहीं, इसमें तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना। दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन वो है जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। That hydrogen will be considered as alpha, which is attached with alpha carbon. ठीक है? यहीं पर if I give you this one, ध्यान से देखिएगा। Have you ever seen this compound? This is what? Phenol. लेकिन इसकी खास बात देखो, ये पार्ट आप ऑब्जर्व करो। What is this? C double bond C attached with OH. कुछ फीलिंग नहीं आ रही इनॉल जैसी? थोड़ी देर पहले ही किया था, इनॉल जैसी फीलिंग। क्या आप इसका कीटो फॉर्म लिख सकते हो? ये जो H है उसको कहां पर ले जाएंगे? वो डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड का पोजीशन किधर चला जाएगा? इधर। इसका मतलब इसका कीटो फॉर्म विल बी दिस। This we call as phenol keto tautomerism. This will always exist together with that one. हाँ, this we call as phenol keto tautomerism. Or this is a resonating structure, right? So if they ask us, okay, so will that also show resonance? Give me 2 minutes. Let me complete this. Phenol form है कि phenol keto? Sorry, phenol keto tautomerism. Phenol keto tautomerism. एक छोटा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर। कंडीशन तो ऑलरेडी आपने लिखा हुआ था। Write 2 small points. You should get to know what was our purpose. देखिए, we cannot discuss these things in detail, but you can write one important point that in previous case when I said keto-enol tautomerism, there you write in most of the cases keto form is more stable than enol form. पहले वाले केस में लिख लीजिएगा, in most of the cases keto form is more stable than enol form. जब भी आपका GOC का डिटेल डिस्कशन होगा तो हम बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कंटेंट भी निकालेंगे इनॉल फॉर्म का। अभी के लिए केवल इतना लिख लो आप। Is it because keto has more resonating structures? नहीं, फिनॉल इन कीटो टॉटोमेरिज्म में लिख लीजिएगा, हियर फिनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। वैसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट अगर जिन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, फिनॉल इज कंसीडर्ड टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड and to maintain its aromaticity it remains in the phenol form. That is why phenol form is more stable. अभी के लिए इतना लिख लीजिएगा, phenol keto tautomerism में phenol form is more stable. तो अगर कोई पूछता है this equilibrium lies mainly in which direction? That will be in the left hand side, backward direction. ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के इसको फिनिश करते हैं। Unfortunately ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट नहीं किया मैंने। CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड है जिसको दिस इज another kind of tautomerism. टीचर को बता
इस फॉर्म को कहते हैं ऑक्सिम फॉर्म, एंड दिस आइसोमेरिज्म इज नाइट्रोसो ऑक्सिम टॉटोमेरिज्म. मेनली आपको कीटोइनॉल करना है अभी के लिए, but ketoinol is not the only tautomerism, so that is why I have given you two more examples, one phenol keto and another one is nitroso oxim tautomerism. Here you can see migration of hydrogen from this carbon to this oxygen and relocation of double bond.